Assalamu alaikum. In today's lecture, we will be talking about a short story, The Nightingale and the Rose, that is written by Oscar Wilde. So, before we move ahead, we need to understand what is a short story, what are the elements of short story. Only then will we be in a position to understand this short story and the coming short stories that are included in your syllabus. So I have written in the form of some notes, and these notes will of course be very helpful for you from the examination point of view and for the general understanding of the short stories. So what is a short story? As far as definition of short story is concerned, what I have done is that I have picked up this definition from Merriam-Webster dictionary, and there are also other definitions, but I found this definition to be much easier, and this is also a comprehensive definition of short story. So how does Merriam-Webster dictionary define the short story? An invented prose narrative shorter than a novel, usually dealing with a few characters and often aiming at the unity of effect and often concentrating on the creation of mood rather than the plot. So this is a very, you can say, comprehensive definition of short story that is given by Merriam-Webster dictionary. So let us analyze this definition. So an invented prose narrative. So the first thing that we need to keep in mind about the short story is that the first short story is a narrative. A narrative mean that in this you can say narrative mean that it a story is told, but the story is told in prose, not in poetry. So that is, you can say that this is an invented prose narrative. The first thing to be taken into consideration about short stories, that it is not told in the poem, it is not told in a verse, but it is told in prose. So the second thing is shorter than a novel, shorter than a novel. So I would like to add one thing more here. The first, you can say the first genre is novel. The novel, you know very well that it is the biggest genre, it is the largest, and after novel comes novella. What is a novella? Novella is a shorter than the novel, but it is larger than a short story. And the third thing is short story. So short story is, you can say, shorter than novella. So there are three things: one is novel, other is novella, and the third thing is short story. So now let's talk briefly about the development of the short stories. In order to understand this development, we need to understand the thing that society is dynamic. Society keeps on changing. You can say it is not static. It moves from one form to the other form. You can say that different kinds of changes they take place in society. So in the ancient times, people had a lot of time, and people used to entertain themselves by the, you can say, by the larger works in the form of novels, or in Urdu you can say dastan. So the people had a lot of time, and that is why in the you can say that in the ancient periods, in the ancient times, we had novels in, you can say, in different series. We have 2 or 3 volumes novels, for example, and then you can say in other words, you can say that in the past, people you can say wrote novelists wrote novels. Why? Because novels were very popular at that time, and they used to write very large novel like Pride and Prejudice, written by Jane Austen, A Tale of Two Cities, written by Charles Dickens, or you can say The Return of a Native, that is written by Thomas Hardy. But with the passage of time, as the society you can say modernized itself, or you can say society changed from the past to modernization, the people did not have a lot of time in order to read very lengthy novels or enjoy themselves with the lengthy novels. So novella came into being. What are the examples of novella? For example, Albert Camus wrote A Stranger. This is a novella because this is larger than a short story, but this is shorter than a novel. Then we have the Metamorphosis, that is written by Franz Kafka. This is also a novella. Then we have Heart of Darkness, that is written by uh, Joseph Conrad. This is also a novella.
So after novella, you can say short story came into being. We still read novel, but in the present time, you see that we have the novel, but these novels are very shorter novel. These are shorter novel as compared to the novels in the past. So this is a development of the short story. So what are the elements of short story? There are different books have written different elements of short story, but I have written these 7 points. The first point about short story is that the plot is the element of the short story. The first element of the short story is called the plot. So plot, what is the plot? The sequence of events that make up the story. The sequence of events. So this means that there is a difference between the plot and the story. Plot is something else while story is something else. So what are the elements of plot? Plot has exposition, plot has rising action, it has climax, it has falling action, it has resolution. So right now we need to understand the difference between the plot and the story, and for this I have taken these two examples from the book Aspects of Novel, that is written by E.M. Forster. E.M. Forster, he is an English novelist as well as he is a critic, and he says that what is a story. Here he gives a very beautiful example. The king died and then the queen died. This is a story. And but we say that when we say the king died and then the queen died of grief, so this is a now this is a, you can say, plot. Why is this a plot? In the first example, the king died and then the queen died, you see that this is just a, you can say, sequence. And but in the second thing, the king died and then the queen died, you see that the dying of the queen, it actually sprang from, or it actually stemmed from the king's death. So this means that there is a relationship of cause and effect between the first thing and the second thing. So this is a plot. Then we have characters. We know very well that the people or the individuals in the short stories, in the dramas, in the films, they are the characters. So the characters are of two types. One is flat characters and other are the round characters. So flat characters are two-dimensional characters. They are, you can say, not they lack depth. They are not complex characters, and usually you can say that the minor characters in the short stories and the novels and dramas, they are the flat characters. On the other hand, round characters are multi-dimensional. They are very complex characters. They, you can say, they have a lot of depth. So these are called multi-dimensional characters. And what we need to understand about flat characters and multi-dimensional characters is that the round characters, they also develop. They change with the passage of time. As the story, you can say, moves, or as the narrative moves, they also change. Then setting, the time and the place is called setting. Then conflict. Conflict, you can say, conflict is very important thing to be understood with regard to the elements of the story. So what is conflict? You can say there is external conflict and there is internal conflict. I can give you an example about the conflict from this story Button that you people have read, and this could be very easily understandable for you. So in what is external conflict? External conflict is the conflict between the characters. It is called external conflict. While the internal conflict, it is a conflict that is within the character. This is called the internal conflict. I can give you an example from the Button. You see that in Button, Mr. Stewart comes to Norma's home and he tells them that if they press the button unit, they would be getting an amount of $50,000. So there is a conflict between Arthur and Mrs. Stewart, because according to Arthur, this is something that is immoral. But so there is conflict between them. So when Mr. Stewart leaves, when he has gone, then there is a conflict that starts between Arthur and Norma, because as far as Norma is concerned, she wants to press the button unit. On the other hand, Arthur does not like to do so because he considered this thing as immoral. So there is a external conflict between them. But after, you can say, Arthur has gone, there is an internal conflict within Norma. It means that there are two forces within Norma. One force tells her to push the button unit, and other force, you can say, it tells her not to push the button. So there is an internal conflict between them. So conflict is very important. Then we can theme. The underlying messages in they are called the theme. Point of view mean that the way that a story is narrated.
the way that a novel is narrated, the way that the stories are narrated. This is called the point of view. So there are three point of view, but I have written two point of view here. One is first person narrator, other is third person omniscient narrator. So in first person narrator mean that the story is narrated by the character in the first person. So as far as today's story is concerned, the Nightingale and the Rose, it is told in the first person point of view. And then third person point of view mean that in this story is told by the narrator who is the third person. For example, if you read the button, it has the third person point of view. If you read A Tale of Two Cities written by Charles Dickens, it has the third person point of view. And if you read Great Expectation, that is written by Charles Dickens, this has the first person point of view, because this story is told by people. So these are the point of view. Then you can say these are style, symbol, motifs, and other literary devices. So these are the elements of the short story, and I hope these elements will be helpful to you from the point of view of the general understanding of short story. So right now we should move on to the story, The Nightingale and the Rose. So I have written four terms. One is fairy tale, the second is fable, parable, and allegory. Why I have written is it is because of the fact that these terms, they are related to the present story. So fairy tales, fairy tale in mean परियों की कहानियाँ in Urdu you say. So fairy tales, these are meant mostly by for children, and these have magical elements. These have supernatural elements. So these are called fairy tales. For example, there is another story that is written by Oscar Wilde. The name of the story is The Happy Prince. The Happy Prince is also fairy tale. Fairy tale. So then we have fable, and then we have parable. Fable and parable, they you can say they have you can similarities as well as they are different from each other. As far as the fable is concerned, the fable has animal as the characters, and the purpose of fable is to teach a moral lesson. And on the other hand, parable has parable does not have animal as the character, but it has human beings as the characters. So the purpose of parable and fable is to teach the moral lessons, but you can see the differences between the characters. But we may have some of the stories which can have the elements both of the fable as well as parable. And allegory, what is allegory? Allegory means that a story, whether you can say in prose or poetry, it has double meaning. One is the surface meaning, and the other is the you can say the metaphorical meaning. So this is called allegory. So as far as the present story is concerned, this is also an allegory, and this is also fairy tale. So let's move on to the story. First of all, the first thing to understand this story is that this is written by Oscar Wilde, and Oscar Wilde is a very interesting writer. What is most interesting about Oscar Wilde is that he is a poet, he is a dramatist, and he's you can say short story writer, and he's a critic as well. You can say that he is a very diversified writer. He's a critic, he's a dramatist, he's a short story writer, and he is primarily known for his the Picture of Dorian Gray, and then he wrote a drama that we studied in our MA, The Importance of Being Earnest. This is a very, you can say, a good drama that is written by Oscar Wilde. And Oscar Wilde, he is an Irish writer. So this is a summary and some main points in the 10 points that I have written. But I would like all the students to do to read the original text, because many students, they are in the habit of reading just relying upon the summaries, and these you can say point. Please keep in mind that these points and these summaries, they are meant to supplement your understanding of the text. You should not ignore the original text. You should read. You can say that you should benefit from these points, but you must not be able to understand that these notes or these points, they are the substitute for the test. They are meant to supplement the test, the text. They are meant to help you to understand the text. So these are some of the points, and these which you can read on your own along with reading the text. So you see that first of all we talk about the
narrator are the point of view. As I have already told you that the point of view in the story is a first person narrator, because when the story starts, the boy, who's the narrator of the story, he says that the girl, his beloved, he says to him that I would dance with you if you brought me the red rose, if you brought me the red rose. But the boy says that I do not have any red rose in my garden at all. So that is why the boy is very worried, he is very confused, he is very perplexed, because he does not have any red rose. And this is the demand from his beloved. So that is why he will have to fulfill his demand to bring the red rose. But unfortunately, he does not have a red rose. So you see that there is a verse in Urdu that is written by Ghalib. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगल देखो कम निकले. So the same is the case with the boy. Understood? And it means that he will have to get his desire fulfilled. But the problem is that and problem and the difficulty is that he does not have the red rose in his garden. It means that the success and the failure of his love or proposal with the beloved, it depends upon the availability of the red rose. But unfortunately, he does not have a red rose. So while you can say he was worried and perplexed and he was meditating and contemplating about his condition, the nightingale, you can see the nightingale was listening to him. The nightingale, and we know this thing very well, that a nightingale and the rose, they are also very important, especially in Urdu poetry. You see, in Urdu poetry, you can say that the nightingale is the lover and the rose is the beloved. So since the nightingale is a lover and the boy is also a lover, so they can be able to the nightingale can be able to understand very well the feelings and the emotion that are being experienced by the boy right now. Okay, so what does he do? What does the nightingale do? The nightingale, you can say the nightingale decides to relieve this lover of his plight, because the nightingale knows very well what are the pangs of love. What are the pangs of love? कि मोहब्बत के कुर्ब जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो नाइटिंगेल तो जानता है ना, ठीक है. देन ही गोज टू डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यू कैन से. तो सब उसे जवाब दे देते हैं, लेकिन एक फ्लावर के पास जाता है तो फ्लावर शायद वो या तो येलो होता है या वो शायद वाइट होता है. तो वो उसे कहता है कि जो होता है ना कि आई वुड बी एबल टू टर्न माई सेल्फ इन टू द रेड रोज, ठीक है. अब वो इस कंडीशन लगा देते हैं. देखिए, लव डिमांड सेक्रीफाइस, मोहब्बत जो होता है बगैर सेक्रीफाइस के नहीं हो सकती, उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है. इश्क के अंदर कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है. हमारे जितने भी रोमांसेज है, जितने भी हमारी दास्तानें हैं, उसमें हमें ये बात का पता चलता है. तो वो कहता है कि अगल जो होता है ना कि इफ़ यू पियर्स यू कैन से दिस थॉर्न ऑफ माइन इन टू योर चेस्ट, ठीक है, एंड इफ़ यू सिंग मी अ सॉन्ग, ठीक है, इन द मिड नाइट व्हेन द मून यू कैन से शाइन्स. तो फिर उसके बाद क्या होगा कि यानी तुम्हारा जो खून होगा वो मेरे अंदर जाएगा, ठीक है, और मेरा क्या होगा कि तब जो है कि यानी इट्स कलर विल बी रेड, ठीक है. अब ऐसा ही होता है, ठीक है, चूँकि अब आशिक है, एक आशिक वो जानता है, ठीक है ना, तो वो इस चीज़ को समझता है, वो ज़ाहिर जानता है कि मतलब वो एक मेरे ऊपर जब ये जुदाई जब गुजरती है तो मेरे ऊपर क्या यानी गुजरती है, ठीक है. इस तरह वो लड़के को जो होता है ना उसकी वो कन्फ्यूजन से, उसकी परेशानी से निजात दिलाना चाहता है. आशिक की बात सुनता है ना, ठीक है. अब इसके बाद वो क्या करता है, वो जो उससे अपना उसके कांटे को ऊपर अपना सीना रखता है और उसे गाना गाता है, गाता जाता है, जो गाता जाता है. तो उसके बाद क्या होता है कि यानी मॉर्निंग के वक्त जब चांद ग्रूब हो जाता है, ठीक है, तो तब जो होता है कि उसका सारा खून चूँकि जो होता है ना कि इट हैज़ यू कैन से पेनिट्रेटेड इनटू द फ्लावर एंड नाउ द फ्लावर हैज़ बिकम रेड, ठीक है. लेकिन इस दौरान अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो नाइटिंगेल वो अपनी जान दे देता है, ठीक है. अब लड़का जब सुबह उठता है वो देखता है कि यानी उसके अब जो फूल सुर है तो उसकी जो होता है ना कि हिज जाए, ठीक है, लीव्स नो बाउंड, ठीक है, वो तो खुशी से फूल न समाता है, ठीक है. वो फूल तोड़ता है, वो बिलाविड के पास चला जाता है, वो कहता है ये लो जी बिलाविड के वो फूल देता है. लेकिन अब जो बिलाविड क्या है कि यानी उसको जो है ना एक और जो बंदा है, एक और जो उसका एक लवर पैदा हो गया है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसको जुवल दे देता है, ठीक है, यानी उसके जो ज्वेलरी दे देता है, हीरे जवाहरात दे देता है, ठीक है. अब नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द गर्ल, ठीक है, शी डज नॉट हैव एनी इम्पोर्टेंस फॉर दिस फ्लावर,
Okay, this red rose is no more important for her. Because why is it is no important more important for her? ठीक है, क्योंकि उसको ज्वेल मिल जाते हैं, उसको ज्वेलरी हीरे जवाहरात मिल जाते हैं। ठीक है, अब उस लड़की के की अगर बात करें, ठीक है, उसके हवाले से तो हम देखते हैं तो उसको जो ज़्यादा चीज़ पसंद है वो तो एक मटेरियल चीज़ पसंद है। ठीक है, सिंस ज्वेल एंड पर्ल्स दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मटेरियलिज्म एंड सुपरफिशियलिटी एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ द विक्टोरियन वैल्यूज़। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो फूल को जो तरफ फिट नीचे फेंक देती है। ठीक है, उसके नज़दीक फूल की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ये जो आइडिया हमारे सामने नज़र आ रहा है, देखिए अब इसका आइडिया ये हमारे नज़र आ रहा है। ठीक है, कि actually since the story was written during the Victorian times, and during the Victorian time people had become very materialistic, they have materialistic tendencies। ठीक है, they did not have any importance for artistic works and art at all। ठीक है, यानी आर्ट की कोई वैल्यू उनके यहाँ नहीं है। ओके, उनके यहाँ जिस चीज़ की वैल्यू है वो इस चीज़ की है कि जो उन चीज़ को जो उनको जो मादी चीज़ हो। एक होता है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी उनके यहाँ उस चीज़ की वैल्यू होती है जो कि यानी प्रैक्टिकल एडवांटेज का बायस बने, प्रैक्टिकल फ़ायदे का बायस बने। ठीक है, यानी दे डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस फॉर दीज आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो यहाँ से ये जो होता है ना कि यानी थ्रू दिस स्टोरी वी कैन से दैट द मटेरियलिज्म एंड आर्टिफिशियलिटी एंड सुपरफिशियलिटी ऑफ द विक्टोरियन टाइम इट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट वेरी यू कैन से वेरी आर्टिस्टिकली। ठीक है, अब अगर हैप्पी प्रिंस हम पढ़ते हैं इसकी कहानी तो उसके अंदर भी ये बात हमें बताई गई है। ठीक है, ये अब हमारे पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी कहानी के अंदर, देखें अब सिंबल्स हैं इसमें। प्लीज कीप इन माइंड द सिंबल्स, मोटिव्स एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस लाइक आयरनी, यू कैन से फोरशैडोइंग, पैराडॉक्सेस, दीज आर ऑल मेंट टू सर्व द थीमेटिक पर्पसेस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी और अ टेक्स्ट। ठीक है, इन सब का ये मकसद ये होता है कि इन टेक्स्ट की जो थीमेटिक कंसर्न होते हैं उनको बताना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रेड रोज इसमें सिंबल है। ठीक है, तो वी नो दिस थिंग वेरी वेल दैट रेड रोज इज अ सिंबल। ठीक है, रेड रोज इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद लव। जैसे मीर का एक शेर आता है ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, एक जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने, तो ये वही बात हो रही है ना यहाँ भी। ठीक है, अब रोज जो था, रेड रोज जो था कि इन दिस स्टोरी द रेड रोज इट इज हैविंग अ सिंबॉलिक आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस, एंड द थिंग इज दैट in the Victorian time, during the Victorian time, or in the present time, or the modern age, that is marked by or characterized by you can say sheer materialism and superficiality. These artistic things they do not have any importance at all। ठीक है, यहाँ से एक और भी बात हमें वाज़ह नज़र आएगी। देखें जो रेड रोज है ना, चूँकि मैंने पहले आपको बताया है कि जो ऑस्कर वाइल्ड है ही इज़ आल्सो अ पोइट, ही इज़ आल्सो अ ड्रामाटिस्ट, ही इज़ आल्सो अ क्रिटिक। ठीक है, अब उसका एक मौक़िफ़ ये होता है कि जिस स्कूल ऑफ थाट को ऑस्कर वाइल्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो स्कूल ऑफ थाट ये कहते हैं कि आर्ट जो होते हैं ना, आर्ट, अब आर्ट क्या चीज़ होती है, art is something that is created with the help of imagination and which appeals our aesthetic senses। ठीक है, हमारे हिस्से जमालियात को तस्कीन देती है। अब एक पेंटिंग भी आर्ट हो सकती है, लिटरेचर भी आर्ट है, पोइम भी आर्ट हो सकती है, शॉर्ट स्टोरी भी आर्ट हो सकती है। उसके मुताबिक ये है कि जो आर्ट का मकसद, जो आर्ट की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, आर्ट का मकसद सिर्फ ऐसा होता है ना कि बजाते खुद अपने अंदर ही मकसद है। ठीक है, आर्ट डज नॉट हैव एनी पर्पज एट ऑल। ठीक है, आर्ट का इसके मुताबिक ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये अब इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये होता है कि नाइटिंगेल किसका सिंबल है, नाइटिंगेल ज़ाहिर है लव का सिंबल होता है। ठीक है, ये सेल्फलेस लव का सिंबल होता है। ठीक है, अब लव के अंदर सेल्फलेसनेस तो होनी चाहिए ना। अब इफ अ काइंड ऑफ आर अमेलगामेशन ऑफ सेल्फिशनेस, ठीक है, अगर लव के अंदर शामिल हो जाए तो वो मोहब्बत तो नहीं रहती ना। ठीक है, तो उसमें सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। इसके बाद आगे आता है थोर्न। थोर्न देखे कांटा, कांटा आपने देखा, कांटा आमतौर पे उर्दू में भी हम इसको सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टीज सिंबल वगैरह लेते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि उसने मेरे रास्ते में कांटे बिछा दिए तो मतलब ये होता है कि डिफ़िकल्टीज हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। अब इसका मतलब है कि लव, अब देखें ये तो तीन चीज़ें हैं। ठीक है, एक होता है रेड रोज है, सेकंड है नाइटिंगेल, और थर्ड इनके दरमियान, तीनों के दरमियान जो होता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, क्योंकि क्यों होता है कनेक्शन, किसकी वजह से होता है। अब रेड रोज नाइटिंगेल जो, नाइटिंगेल एक सेल्फलेस लव का, सेल्फलेस एक आशिक का सिंबल है। ठीक है, लेकिन वो रोज को रेड करता है। रेड कैसे करता है, थोर्न के जरिए। अब थोर्न जब अपने कांटे अपने सीने में चिपकता है, ठीक है, तो थोर्न इसका मतलब है कि यानी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस रिगार्ड इज दैट कि लव डिमांड सेक्रीफाइस। ठीक है, लव मोहब्बत जो होता है ना सेक्रीफाइस को डिमांड करती है। ठीक है, अब उसकी जो होता है ना कि एज अ रिजल्ट ऑफ इस सेक्रीफाइस व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो जो रोज होता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, अब रेड रोज इसका मतलब है कि देखिए एक आर्टिस्ट जो होता है, आप खुद देख ले कि नाइटिंगेल एक आर्टिस्ट का
भी सिंबल है ना। ओके, एक आर्टिस्ट जो होता है वो किस कैफियत से, किस ग्रुप से गुजर के उसने एक शॉर्ट स्टोरी या एक पोएम या एक ड्रामा या अदब पारे एक पेंटिंग की, लेकिन उस पेंटिंग की दुनिया के अंदर कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, यानी दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से जो ये जो उसका डिक्टम है ना ऑस्कर वाइल्ड का कि आर्ट फॉर आर्ट से, कि फिर उसको री कर रहा है। अब जुवल्स मैंने पहले डिस्कस किया कि जुवल जो होता है सिंबल होते हैं डेफिनेटली ये जो आर्टिफिशियलिटी का, सुपरफिशियलिटी का, और जुवल जो होता है दे आर सिंबलाइजिंग मटेरियलिज्म, ठीक है। अब देखें, अब वो लड़की जो होती है गर्ल होती है, गर्ल का जुवल्स को एक्सेप्ट करना और फूल को रिजेक्ट करना, ये इसको सिंबलाइज कर रहा होता है कि यानी जदीद दुनिया के अंदर, ठीक है, आर्टिस्टिक क्रिएशन की कोई अहमियत नहीं बल्कि मादी चीज़ों की जस्ट अहमियत है। इसके बाद नेचर इमेजरी है, आयरनी इसके अंदर हमें नज़र आती है, ठीक है। अब फेरी टेल एलिमेंट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, इसके कंट्रास्ट हमें नज़र आते हैं। एस्थेटिसिज्म, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एस्थेटिसिज्म देखें, एस्थेटिक्स क्या होता है? एस्थेटिक्स जो होता है वो स्टडी होता है खूबसूरती की, ठीक है। तो एस्थेटिसिज्म मैंने पहले आपको बताया कि यानी द स्कूल ऑफ थॉट that was represented by ऑस्कर वाइल्ड, इट बिलीव इन द आर्ट फॉर आर्ट से, कि कहते हैं आर्ट की कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होती। तो इस कहानी से हमें ये बात वाज़ह हो गई, ठीक है, कि उसके अंदर क्योंकि ये फूल है जो रेड रोज़ है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन, ठीक है। जैसे कहानी एक आर्टिस्टिक क्रिएशन, एक सॉन्ग आर्टिस्टिक क्रिएशन हो सकता है, एक मतलब दूसरी चीज़ें जो होते हैं आर्टिस्टिक, तो इसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो यहाँ ये इस बात को डिक्टम को जस्टिफाई कर। इसके बाद देखें, इसके अंदर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है। सुपर नेचुरल एलिमेंट कौन से होते हैं? जिसके जैसे हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर यानी वो चांद नज़र आता है, चांद के अंदर मतलब जो रात को गाना और फिर मर जाना, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है ना। अब ये क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डज द मोटिव ऑफ सेक्रीफाइस कंट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ द लव, थीम ऑफ ट्रू लव इन द स्टोरी, ठीक है। तो ये हमने ऊपर एलैबोरेट किया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो होता है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेड रोज एज अ सिंबल एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। मैंने इसके अंदर सिर्फ पॉइंट्स के अंदर लिखा है, तो पॉइंट्स को आप फिर एलैबोरेट कर सकते हैं। एक्सप्लोर द रोल ऑफ नेचर एंड सुपर नेचुरल इन द एनहांसिंग द स्टोरीज थीम्स, ठीक है। इसके सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाता है कि यानी पैराडॉक्सेस है और इसके बाद आयत नहीं है। तो यानी दीज आर 5 क्वेश्चन दैट यू कैन रिसर्च अपॉन, दैट यू कैन राइट एंड देन द स्टोरी विल बी एबल टू बी अंडरस्टूड बाई यू। तो आखिर पे मैं लाजमी ये कहूँगा कि आपको ये जो कहानी मैंने बताई है, जो चीज़ें बताई हैं, इसको टेक्स्ट के साथ सप्लीमेंट मस्ट करें, टेक्स्ट को इग्नोर ना करें, टेक्स्ट के साथ इसे सप्लीमेंट करेंगे, फिर आपको इसकी समझ आएगी। थैंक यू सो मच।